No maidens, 32 runs for no wickets, and Darren Lehman 5 overs for 16 runs so far with 1 wicket to his credit. Those have been the other bowlers in addition to the leading bowlers Gillespie, McGrath and Kastrovic of course. Gillespie bowling the 49th over of the innings. He has so far bowled 8 overs. नमस्कार, आज क्रिकेट टॉक पर मेरे साथ फिर से हैं विनीत सक्सेना और आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी ही रोचक मुद्दे पर कि भारत का क्रिकेट कैसे समय के साथ बदलता गया। भारत के क्रिकेट को अगर आप देखेंगे तो इमरान खान किसी समय में कहते थे कि इंडियन क्रिकेटर्स नाइस गाय हैं, काफी अच्छे लोग हैं और उनमें वो एग्रेशन नहीं है। हारने के बाद भी उनको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है। एक टाइम था जब भारत में सुनील गावस्कर की टीम थी, उसके बाद अजरुद्दीन की टीम आई और उसके बाद अजरुद्दीन के बाद हमारे पास आप देखेंगे कि थोड़े समय के लिए सचिन तेंदुलकर आए, फिर सौरभ गांगुली आए, सौरभ गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए। तो काफी कुछ हमने देखा है कि भारत के कप्तानी के बदलने के साथ भारत के बिहेवियर में, क्रिकेटिंग बिहेवियर में भी बदलाव आया है। और कपिल देव ने जो 83 में जीता था, जिसको फ्लूक कहा गया था, वो जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में जीता तो उसको फ्लूक नहीं कहा गया, उसको एक तरह से टीम के ग्रोथ के साथ देखा गया। तो विनीत, आप क्या सोचते हैं कि ये चेंज कब आना शुरू हुआ होगा? जैसे आप कह रहे थे कि सुनील गावस्कर, अजरुद्दीन और जो हुआ शारजा में इन द लेट 90s, यस राइट, दैट वो जो दैट होल स्कैंडल, मेरे हिसाब से द मेन चेंज जो 2011 और 2 साल पहले विराट कोहली और लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीतना, बहुत फर्स्ट एशियन टीम, वेरी वेरी बिग थिंग, राइट, वेरी बिग थिंग। इट कैन बी कंपेयर्ड टू जैसे स्टीव वॉ इंडिया के, ही वन द सीरीज फाइनल फ्रंटियर, दैट वाज ओनली 2000 जब उस समय में था। तो आई थिंक सौरव गांगुली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉन राइट का इंडिया में कोच बनना, that was very pivotal in कैसे Indian team always very very talented, right? Mohammad Azharuddin, Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, Virender Sehwag, I mean batting powerhouse, Rahul Dravid. पर जो attitude जो change हुआ वो जॉन राइट और सौरव गांगुली के समय से change हुआ। तो विराट कोहली का लास्ट ईयर जीतना ऑस्ट्रेलिया में और महेंद्र सिंह धोनी का जीतना 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, I would say कि the turning point was John Wright. And John Wright actually came. He was the first foreign coach, proper Foreign coach, yeah. हमारे पास थे बॉलिंग कोच या कुछ ट्रेनर्स थे, बॉब सिम्पसन भी आए थे, लेकिन फर्स्ट फॉरेन कोच, फुल टाइम फॉरेन कोच वी हैड इन जॉन राइट। और वो भी ऐसे टाइम में आया जब इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम द मैच फिक्सिंग स्कैंडल और उसके बाद हमारे पास मतलब कपिल देव वाज कोच बिफोर जॉन राइट एंड कपिल देव had to leave in a very I would say in a very bad situation with the Karan Thapar interview and all. And उस समय हमारे पास एक फॉरेन कोच आता है and he lands in a board। जब मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें कि जॉन राइट कह रहे हैं when he came into the board he was surprised कि लोग बैठ के समोसा चाय खा रहे हैं टीम मीटिंग में, even the team members। And when he sat on the net practice तो वहां पे सारे लोग आके बैठ गए और सिर्फ 2 लोग खेल रहे हो, करे what is this, where is the fielding? फिर उसके बाद हाथ में लोग फील्डिंग के प्रैक्टिस के लिए हाथ में टेप बांधने लग गए कि उनको कभी भी ऐसे नेकेड हाथ से फील्डिंग प्रैक्टिस कराया नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ कल्चरल चेंज जॉन राइट माइट हैव फेस्ड। आप कैसे बोलेंगे? आपने तो रियली खेला है। How used to practice and what is the change that one can expect? Absolutely, and it is not about foreign coach or Indian coach. आज भी मतलब if you see रवि शास्त्री के नीचे जो कोचेस है, I think a bowling coaches Jay Arun or M.V. Sridhar, even there were Sanjay Bangar was थोड़े समय के लिए Sanjay Bangar was a coach, but the cultural change John Wright के समय से हुआ, and उस समय Indian coach भी could have done that, पर हुआ नहीं। अपना Indian culture जैसा है, the very even in our daily life हम लोग का चलता है attitude, right? जितना minimum काम करके आगे निकल जाओ तो ठीक है, पर John Wright brought in a lot of good ideas, and leadership change, cultural change is always top down. नीचे से कभी change नहीं होता है, that's just
proven management rule कि ऊपर से ही change happens. That's why नीचे पर भी attitude will change. And एक दो साल के लिए when that happened, the whole idea of a star player in a team, in every team, सब जगह चाहे कोई भी खेल आप देख लीजिए, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, 2-3 स्टार तो हर टीम में है, ठीक है, that's just given. But to treat everybody the same, to drop that attitude of star player कि yeah, boss, I'm the star player, that makes the team more efficient, more productive, and to get a winning culture, to win every time. स्पोर्ट का फायदा क्या है? प्रोफेशनल स्पोर्ट का एक ही गोल है, you have to win every time you play. अगर वो attitude नहीं आएगा, then you will not win. That Steve's team was so good, Ricky Ponting's team was so good because the whole attitude is we have to win. Yeah, actually that's right. He brought a team culture. अगर देखें Yeah. अजरुद्दीन के टाइम में if तेंदुलकर is gone तो लगता था कि अब टीम खत्म हो गया, उसके बाद तेंदुलकर गया तो हार गए, और ऐसा होता था कि तेंदुलकर used to fall at a very critical point. After that we used to, मतलब he used to make 100 and then we used to lose. लेकिन अगर हम देखें post John Wright as you say कि ईडन गार्डन का ही वो टेस्ट अगर लें तो उसमें तेंदुलकर didn't do much with the bat, और फिर द्रविड़ और लक्ष्मण एंड तेंदुलकर ultimately came with the ball in fact in that match. फाइनली वो 3 विकेट हेडन और वार्न इन सब का विकेट लिया, तो द टीम स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी वे. और बाद में जो युवराज सिंह एंड कैफ, मोहम्मद कैफ, एंड जो मिडिल ऑर्डर हमारा कभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, बाद में हमने देखा कि द्रविड़, युवराज सिंह, कैफ, मिडिल ऑर्डर हमारा काफी पावरफुल हो गया इन द वर्ल्ड कप आल्सो एंड अदरवाइज. तो ये मेरे ख्याल से ही inculcated कि everybody has to absolutely. There's a very famous story, and this goes about, I do not know how much of this is true, but it's a very good rumor. आपने भी सुना होगा. Virender Sehwag was batting at 150 odd in Kanpur or someplace, and you know Virender Sehwag, the way he plays, 7-8-10,000 जितने भी test runs है, is just how he plays. But he got out to a very rash shot after batting for 125 or 150, and when he came to the dressing room, John Wright just held him by the collar, threw him against the wall. Maybe it's true, maybe it's not true. A lot of people say he slapped him. Whatever. What happens in the dressing room stays in the dressing room. But that kind of mindset that your wicket is the most important thing to you as a batsman. Don't just get out because you scored 100 runs. You know, so wo attitude John Wright brought in, and then India went through a phase, I think, and us samay hum Saurav Ganguly got to, Indian team got to South Africa World Cup final, right? Yeah, we went to Africa and we lost the final to Australia. Ricky Ponting का वो spring bat, Ricky Ponting 100, हाँ, I remember that. But वहाँ से change होना start हुआ, and then you know Mahendra Singh Dhoni came, then there was a bit of a turbulent phase after John Wright left, that Greg Chappell came, and although great, probably among the top 5 batsmen of all time in the history of cricket, Greg Chappell, but एक dressing room में there can only be that many big egos, right? When your coach is the biggest ego in a dressing room, what are the players going to do? The players are going to revolt, because एक खिलाड़ी has one thing, he's got physical fitness and he plays on confidence. For someone like Virender Sehwag, जाके पहला ball Alan Donald के सामने खेलना, you just need supreme confidence, otherwise you're done. Because Alan Donald will just, the ball will, नाक के पास से बॉल जाएगा तो हालत खराब है उसके बाद. तो हाँ, ये ग्रेग चैपल, फिर से हम मतलब इंडियननेस पे जो पहले हुआ था कि जॉन राइट केम एंड देन ग्रेग चैपल केम, एंड वी रियलाइज्ड कि फॉरेनर कोच भी जो है, उसके बाद गैरी कर्स्टन केम एंड गैरी कर्स्टन, या सो गुड वर्ल्ड कप. लेकिन एक लग गया था कि बहुत ज्यादा, बिकॉज द इंडियन पीपल दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड, और हमारा बोर्ड ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. राइट. Mohan Dalmia was there who would want Saurav Ganguly to be in the loop, and Chappell is saying कि he is not in form, he has to not only leave captaincy, he has to leave the team. So इस तरह का, and then the email leaks happened, and big actually all things got nasty in the time of Chappell. Dravid was groomed as a captain, which was not meant to be actually. Dravid तो किसी भी role में, he became a wicket keeper for some time. Right. He can fit it any role, but he was, I mean, for being a captain, he was like
I wouldn't say he was a great captain. He didn't prove He didn't want to be. I don't think he wanted to be captain. Yeah. Yeah. But and then now we again come back to the same thing that we are having Ravi Shastri और मतलब हम लोगों को foreigner coach भी बहुत ज़्यादा जो enforcing, if somebody wants Virat Kohli to do in certain ways, तो विराट कोहली may not agree. हम लोगों को थोड़ा सा एक liberal teacher चाहिए जो हल्का फुल्का कुछ करवाए और हम लोग as a team काम कर लेंगे. I won't say liberal. I will say you cannot. हमारे dressing room में, look at the players, right? Virat Kohli. I mean, arguably a superstar, mega star of the sport. Now, let us say, let's just move things around. Okay, let's say Virat Kohli or India ka aaj coach is Greg Chappell. There has to be a clash, right? There has to be two people who are such big egos and confident about their own abilities. That dressing room will go in two different directions. So for a team to produce how India is producing now, someone has to play a smaller role. और वो Greg Chappell के समय और सौरव गांगुली के समय नहीं हो पाया. That's why Saurav Ganguly, and you said email leaks, and Saurav Ganguly was stripped of his captaincy. And yeah, Sachin Tendulkar said that at the time of Chappell, we went like 4 years back into the cricket where we started. Came back to the zero. और फिर जब धोनी भी आया तो initially because Dhoni was anyway new in the team, 2 साल हुआ था वो आया and he became a captain, and then धोनी के आने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत ही जीतना शुरू हो गया फिर, लेकिन एक लगा कि कुछ नया वेव है. एंड एनीवे धोनी के साथ जो टीम आई वो भी नई तरह की यूथफुल टीम, वेरी यूथफुल टीम. मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह और गैरी कर्स्टन वाज लाइक you know, hindsight is 2020. Yeah. 10 साल पहले, आज तो सब perfect. So Gary Kirsten's appointment was a master stroke because Gary Kirsten himself was fairly youthful. He was in his early 40s, and you know, players could relate to him. वो कोई भी खिलाड़ी जाके बात कर सकता है कोच के सामने because कोच का उम्र में उतना अंतर नहीं है. Gary Kirsten at that time, he could have probably doing fitness drills with the players. So there's a bond which forms between player and coach. Once you see your coach is also running side by side with you, it's more of a friendly atmosphere rather than, you know, it's like, it's not a lecture, it's more of mentoring attitude. Even coming one back more thing. Ek aur cheez I want to emphasize with John Wright coming, what happened at that time is, firstly, the culture not only at the top, at the Indian team, the culture going downwards, falling down, because he always emphasized कि अगर कोई test match नहीं खेल रहा है, go back and play Ranji Trophy matches. So you are seeing Sachin Tendulkar showing up for Bombay team. You are seeing Saurav Ganguly showing up for, और होता क्या है, like today Virat Kohli doesn't get to play for Delhi because 200 days a year he's just playing cricket. Yeah. ठीक है, today is just it's a business. जो भी है, तो when Sachin Tendulkar goes to Bombay team and he's playing in some remote area of, let's just say, Assam, okay, Bombay team ke liye, dressing room ke liye, for those players who are there with him, it is such a knowledge gain. It is such a great atmosphere to play in. Just watching him, how he goes about, in his dressing room, his mannerisms. So those things started trickling down. Or ek aur cheez hua ki, around that time, India established, I think, national cricket, the NCA academy, yeah. Right around that time. और उस समय within 4 or 5 years, चाहे बहुत सारे players वहां से नहीं आए, पर आजकल जो भी आता है ना, just comes from the National Cricket Academy, and Rahul Dravid is the director over there. So putting those institutions in place, Indian cricket is in a very good place. Even the fitness wise, if you see, पहले जो वो देखते थे कि फील्डिंग इंडिया का अगर देखो तो somebody will just raise his hand कि वो लॉन्ग ऑन पे जाके फिर आ रहा है और फिर वो दौड़ रहे हैं. संजय मांजरेकर used to be very clumsy between the wickets. Ganguly himself was very clumsy in between the wickets. He used to always get run out. और अभी लेकिन देखो तो everybody is fit. Nobody has a tummy. Virat Kohli और पूरा team. Like, and that's leadership, right? Virat Kohli is very, very fit. Or you see everybody else. I mean, Rohit Sharma, okay, he's a bit on the healthier side, but he produces so much, but he's in his own way, he's very fit.
The whole idea is team first, individuals later. If you can do that, even a mediocre team will produce a lot of good results. Yeah. Yeah. So that was very eye-opening, and we will continue talking more about the aggression part. As you will say, कि Imran Khan ने nice guy बोला था. Now we are not nice guy anymore. We had a we came into sledging. अब देखोगे कि they sometimes fight with the Australians या पाकिस्तानी के साथ लड़ते हैं, जो पहले नहीं दिखता था. अभी aggression even on the field, even you can see the body language of Virat Kohli when he talks with Afridi और जैसे करता था पहले भी. हाँ. तो वो aggression पे हम लोग बात करेंगे कि how Indian team changed, but that will be probably in the next talk. We will talk more about how Indian team came into that. Ekdam. Yeah, absolutely. Yeah, thank you. That was a Thank you very much. Always good talking. To the leading bowlers, Gillespie, McGrath and Kastrovic, of course. Gillespie bowling the 49th over of the innings. He has so far bowled 8 overs, 1 maiden, 35